एक्सिस की साइड नहीं। हाँ, नेगेटिव एक्स की साइड भी ये नहीं है। तो दिस कर्व इज डिफाइंड ओनली इन दिस रीजन। The curve is defined only in this region, right? और जो कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है वही पार्ट नीचे है, जो कर्व एक्सिस के ऊपर है वही नीचे है। तो जैसा पार्ट यहाँ पर होगा, जैसा कर्व यहाँ पर होगा, वैसा ही इसके नीचे होगा, राइट? Now, so can you define the curve? Can you point? Can you find some points? Can you find some points? अगर x की वैल्यू को हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? मैम अंडर रूट ऑफ 1/2a और 2a - 1। राइट। तो अगर सपोज हम a को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, a को सपोज हम 1 मान लेते हैं। हाँ, अगर हम a को 1 मान लेते हैं तो 2a विल बी 2, तो 1/√2। हमें कर्व का बिहेवियर ही तो प्लॉट करना है ना? तो अगर हम a को, इफ वी अज्यूम दैट दिस a इज इक्वल टू 1, तो उस केस पे तो y क्या हो जाएगा? रूट 1/√2, सॉरी 1 ही हो जाएगा वो। यस मैम 1। 1। तो यहाँ पर अगर 1 है तो दिस कर्व विल बी हेयर। अगर कर्व 1.5 सॉरी x की वैल्यू अगर 1.5 है तो कर्व विल कम आउट टू बी हेयर। अगर इस तरह से है तो यहाँ पर आ जाएगा। सो द कर्व इज गोइंग समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज एन एसिम्प्टोट, सो द कर्व कैन नॉट टच this line, and so it will be like something like this. And जैसा कर्व ऊपर होगा वैसा ही कर्व नीचे होगा, तो then this curve is going to be something like this, right? Is it fine now? यस मैम। यस मैम। Okay. So next topic is this thing clear? Is this thing clear to all of you? So now what we are going to do is tracing of polar curves. Tracing of polar curves. Any idea about the polar curves? Any idea about the polar curve? Ma'am, I think they are shapes like we have circular and something like that. Yes, you can have the shapes like मतलब जो आपके कार्टेशियन कर्व्स होते हैं, let me just give you a brief intro about the curves, polar curves. आपके जो कार्टेशियन कर्व्स होते हैं उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है कर्व्स की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है? In case of polar curves, you can represent the same Cartesian curve in the form of a polar curve with the help of another two parameters r and theta. थीटा। ठीक है? तो जो आपका कार्टेशियन सिस्टम, जो आपका कार्टेशियन, जो आपका वो प्लेन होता है, वो प्लेन अभी भी हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जो आपका कार्टेशियन में ये आपका x होता है और ये आपका y होता है, इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं जब हम पोलर कर्व्स की बात करते हैं। पोलर कर्व्स में जो ये लाइन होती है, दिस लाइन जो भी जो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, कि आर का मतलब क्या है कि व्हाट इज द रेडियस, मतलब आपका ये रेडियस है या ये रेडियस है या ये रेडियस है, या फिर इस लाइन पे
ये रेडियस है, ये रेडियस है, व्हाट इज द रेडियस? सो दैट डिफाइंस द वैल्यू आर, ठीक है। एंड थीटा डिफाइंस द एंगल फ्रॉम द 0 degree. This line defines the 0 degree. I'm really sorry if this is एक second. In polar curves, the curve is defined with the help of these two things, r and theta. This line, the x-axis defines the 0 degree, and this line defines the 90 degree. This line defines the 180 degree. This line defines the 270 degree, and so on. Then this comes out to be 360 or 0 degree. ठीक है, तो हमारा जो भी लाइन ये होता है, अगर ये लाइन है, then this line defines the curve at theta degree. ठीक है, and how we make the transformations? How we make the transformations are x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. ठीक है, this is how we make the transformation. This is how we define the values. अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. कैसे निकाला? इन दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? Ma'am, one. 1. So we can find the value of r from this equation. ठीक है, so now if I talk about the tracing of polar curves, I have given you a very brief overview of polar curves कि polar curves की representation कैसे होती है. It is very important to understand कि polar curves की जब हम बात करते हैं तो उसको हम represent कैसे करते हैं. ठीक है, so now r is the radius and theta is the angle from the x-axis or from this 0 degree. ठीक है, यहां से इसका एंगल क्या है? So now if we talk about the symmetry in tracing of polar curves, so if we change theta to minus theta and the equation of the curve remains unchanged, then we say that the curve is symmetrical about the initial line theta equal to 0. तो अगर हम थीटा की वैल्यू को जो इक्वेशन के अंदर हमारा जो थीटा है वो पॉजिटिव है और उसको हम माइनस थीटा कर देंगे and the curve remains the same, the equation of the curve remains the same, then we say that the curve is symmetric about this x, we say that the curve is symmetric about theta equal to 0, this line, right? Is that fine? Is it Yes, fine? ma'am. Are Yes, you, ma'am. Yes. do you all want to write this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can write it. If I change my theta to minus theta and the equation of the curve remains unchanged, if I change my theta to minus theta and the curve remains unchanged, then the curve is symmetrical about theta equal to 0. ठीक है, then the curve is symmetrical about theta equal to 0. If I change my theta to pi minus theta, if I change my theta to pi minus theta and the equation of the curve remains unchanged, and the equation of the curve remains unchanged, then the curve is symmetric about theta equal to pi by 2. Theta equal to
pi by 2. If I लिख लिया ये सारा, तो मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि आप टेबल बना सकते हो चाहो तो। इफ आई चेंज, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम, चेंज करने से ये क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्री अबाउट, if I change my theta to minus theta, then it is symmetric about theta equal to 0. If I change it to pi minus theta, then it is symmetric about theta equal to pi by 2. If I change theta to pi plus theta, if I change my theta to pi plus theta and equation remains unchanged, the curve is symmetric about the curve is symmetric in the opposite quadrant. The curve is symmetric in the opposite quadrant. ठीक है? If I change my theta to pi by 2 minus theta, if I change my theta to pi minus theta, then the curve is symmetric about theta equal to pi by 4. That is this line, the x equal to y line. This is your theta equal to pi by 4. मैम पाई प्लस थीटा के लिए प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्या बोला था हाँ जी, मैम? पाई प्लस थीटा के लिए रिपीट कर दीजिए। when the curve, if you change theta to pi plus theta and the equation of the curve remains unchanged, the curve is symmetric about, the curve is symmetric in the opposite quadrant. The curve is symmetric in the opposite quadrants. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सपोज आपने ये फाइंड आउट किया कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, आपने थीटा को माइनस थीटा पुट किया एंड यू गॉट थीटा इक्वल टू, सॉरी द कर्व इज, सॉरी लेट मी रिपीट, अगर आपने थीटा को माइनस थीटा करा और इक्वेशन जो है कर्व की वो इफ दैट इज अनचेंज्ड, देन वी नो दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0। and I also change my theta to pi plus theta, then I can say that, and the equation of the curve is unchanged, then I can say that the curve is symmetric about this line also. ठीक है, I'll draw it again. अगर सपोज कर्व मेरा इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, ठीक है, इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस कर्व एंड आई फाइंड दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से भी आपका जो कर्व है वो इक्वेशन है कर्व की वो सिमेट्रिक है, तो आपका जो कर्व लाइन के इधर होगा वही लाइन के इधर भी होगा, इस तरह से। आई मीन दे आर नॉट लुकिंग सिमेट्रिक, बट प्लीज आप ये समझ सकते हैं दोनों की ड्राइंग सेम है। ठीक है, वो तो मैम फिर ऑड फंक्शन हो जाएगा ना? हाँ, तो फिर मैम हम उसे सिमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? वो तो मैम ऑड फंक्शन को तो हम फिर एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। आई डिडंट गेट यू, सॉरी। मैम जब ये दूसरे क्वाड्रेंट में उसी कर्व को हम दोबारा से ट्रेस करेंगे, क्योंकि पाई प्लस थीटा पे भी सेम वैल्यू आएगी, तो मैम वो फिर ऑड फंक्शन हो गया, फिर उसको तो मैम फिर हमें एंटी सिमेट्रिक वो हो जाएगा। अभी आप रुक जाओ, अभी इतना आगे मत जाओ, आप कुछ देखो। अच्छा, इस फंक्शन को देखो, r इज इक्वल टू a sin 2 theta, r is equal to a sin 2 theta, r is equal to a sin 2 theta।
ये कर्व कैसा होगा? Is it symmetric about theta equal to 0? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Right. Is it symmetric about theta equal to pi by 2? No, ma'am. Right. Is it symmetric about theta? Sorry. Is it symmetric about theta equal to pi by 4? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो जो कर्व यहां पर होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ हियर, तो जो कर्व यहां पर होगा वो कर्व यहां पर भी होगा। इज इट सिमेट्रिक अबाउट इज इट सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट? प्लीज अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, ma'am. इट इज सिमेट्रिक इन दी अपोजिट क्वाड्रेंट। तो मतलब जैसा कर्व यहां होगा वैसा ही कर्व यहां पर भी होगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। So now to check if the curve is passing through the pole or not. ठीक है, so if r is equal to 0, to check if the curve is passing through the pole or not. If r is equal to 0 for theta equal to alpha, for some theta equal to alpha, please write down all of you. If r is equal to 0 for some theta equal to alpha, Ma'am, your voice is not clear. is it fine now? Ma'am, it's echoing. Maybe someone has not put it on mute. Are we, Udyan Tripathi, please keep yourself on mute. Samyak Jain. Ma'am, I was on mute. मैम मैं भी म्यूट पे था। अब म्यूट पे हो बेटा, पहले नहीं थे। चलो कोई बात नहीं। If r is equal to 0, to check if the curve is passing through the pole or not. If r is equal to 0, Aditi, is it fine now? Yes, ma'am. If r is equal to 0 for some theta equal to alpha, the curve passes through pole. The curve passes through pole and the line theta equal to alpha is tangent to the curve at the pole. If r is equal to 0 for some theta equal to alpha, the curve passes through pole and the line theta equal to alpha is tangent to the curve at the pole. Is it fine? तो जैसे अभी हमने कर्व की इक्वेशन क्या देखी थी, r is equal to a sin 2 theta. तो r is equal to 0 for theta equal to r is equal to 0 for theta equal to 0. 0. So so theta equal to 0 is the tangent. तो theta equal to 0 कौन सी line है? This line, right? Theta equal to 0 is this line. So this line is a tangent to this curve, and that we all can see. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. For theta equal to pi by 2. For theta equal to pi by 2. Is this is r equal to 0? No, ma'am. Why? It is 0. Yes, It ma'am. is 0. Sin 2 theta है ना, तो 2 theta क्या हो जाएगा? 2 pi by 2. 2 कैंसिल हो जाएगा. What you are left with? R is equal to a sin pi. Sin pi क्या होता है? 0.
So r is equal to 0 for theta equal to pi by 2. So this equation is also a tangent. So theta equal to pi by 2 is, so theta equal to pi by 2 is a tangent, right? So this is how we find the tangents here. So here we also find the value of, tan phi. Tan phi, which is equal to r into d theta by dr, where phi is the angle between, the tangent to the curve. All of you please write down. We find the value of tan phi. Which is equal to r d theta by dr, where phi is the angle between the tangent to the curve, at a point PR theta, like this, between the tangent to the curve at a point is defined by PR theta. अच्छा, हम इसमें पॉइंट को भी जो डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, हम जो कार्टेशियन सिस्टम में हम अपने पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X और Y. X Y coordinate. एक्स एंड वाई. ठीक है, हम जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्स को यहां से उठाया सपोज, और वाई को हमने यहां से लिया, तो ये हमारा कोई पॉइंट बन गया P. अब हम इसी पॉइंट को अगर r थीटा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह से करते हैं. अगर हमारा जो ये लाइन है दैट इज एट एंगल थीटा and of radius r. This is my radius r. This length is my radius r, which is at angle theta. So this is how I define my point P with the help of r theta. I'll represent it again. अगर मेरा ये कोई point है which I want to represent in the polar system, then I have to say at what angle this point is defined theta, at what angle it is defined from the 0 degree or the pole axis, and what is the radius or what is the distance from the origin of this point, this line R. तो basically R is equal to, अगर आप R इसको अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में देखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, यूजिंग दी हाइपोटेन्यूज थ्योरम. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, right? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is how we define the point r theta in the polar coordinate, using the polar coordinates. So you can say, so what we have written is, when we want to find the direction of the tangent, we say that we find the tan phi, which is equal to r into d theta by dr, where phi is the angle between the tangent to the curve at a point PR theta and its radius vector. It gives the direction of the tangent at the point PR theta. It gives the direction of the tangent at the point PR theta. When tangent coincides with the radius vector, when the tangent coincides the radius vectors, please write down, when tangent coincides with the radius vector,
then tan phi is equal to 0. Then tan phi is equal to 0. And when tangent is perpendicular to the radius vector, when the tangent is perpendicular to the radius vector, then tan phi is equal to infinity. ठीक है? Here you would not require to find the asymptotes. I just hope so. अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे. So we determine the points where the curve meets the lines like theta equal to 0, theta equal to pi by 4, theta equal to pi by 2. तो मतलब इन लाइंस पे हम वैल्यू ऑफ r फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हम कर्व थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने ये कर्व ड्रॉ किया, ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, इसमें दिस कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग थीटा इक्वल टू 0. इट इज जस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. It is not intersecting theta equal to 0. It is not intersecting theta equal to pi by 2. So, and we want to find the points of intersection of this curve with theta equal to pi by 4. This line is your theta equal to pi by 4. ठीक है, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे. So this curve is going like this. ठीक है, so we can find the values of intersection of the curve at the lines theta equal to 0, pi by 4, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and so on. मतलब अगर हम चाहें तो और ज्यादा पॉइंट्स पे भी intersections निकाल सकते हैं, right? Then we determine, have you all written intersection with the axis? Intersection with the axis. We determine the points where the curve intersects the lines theta equal to 0, theta equal to pi by 4, theta equal to pi by 2, theta equal to pi and theta equal to 3 pi by 2, etc. Is it fine? Have you all written? Yes, ma'am. Okay. So next we find out the regions where the curve is defined. So we determine the limits, if any. We determine the limits, if any. Please write down. We determine the limits, if any, to which r and theta are confined. To which r and theta are confined. We find the greatest value of r. We find the greatest value of r so as to find. We find the greatest value of r so as to find whether the curve lies within a circle or not. So as to find whether the curve lies within a circle or not. तो जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, if suppose this is the maximum value of r. अगर हम इसके अंदर थीटा को पाई बाय 4 रखते हैं, if I keep theta is equal to पाई बाय 4, तो r की वैल्यू क्या आएगी? A. So this value is A. This is the radius. This is the maximum radius. This is the maximum radius that I can have for the curve here. The curve is not defined in this region. The curve is only defined in this region. ठीक है?
Is it fine? Yes, ma'am. Now next is a very important property that we are going to write. Most of the polar curves have a loop. Most, I'm not saying all, but most of the polar curve has a loop. Like here